Hey. So, I nahangai dia koi lai harau dana kena tahu agi evening class se tahu ko, but ngasi dagi dia dum evening class se tahu ni ko ayuk na ayuk ki evening ni evening ki. So nahangai adum ayuk ki lectures me am duga chap mane ngasi ayuk ta tak kheb dun adum tak to sibudi ko adu lectures me am du chap mane nahangai duga adum nahangai du noi follow tarom gani na su thajai ko ngasi amuk makha ta ba hora ase ko koi playlist ta loi happy. So I give students kay aina group ta keno su thaja khramni loimak link nung ai group ta loi thaja khrabani aduga khoi keno to ba horasi question discussion je horasi hayeng phawba chapter 1 gi question discussion je tawgini ai khoi gi keno dagi di say by Monday hai tar ko by Monday dagi anoba chapter am la ani ko so horasi ahambada question sing si description da loimak yawbani ko I nakan su ithonge hexang pada khangnaba questions in description questions sing ji kadai da loimak yawreba description da loimak yawbani ko questions sing ji description da loimak yawbani ahamba ko so any problem gyan ta da ba khot ba ama wagera adum aingonda kaidoba feel free to ask me chat da adum ko auna se ahamba question ji yeng biro ko description da ahamba question du yeng biro ahamba question ji kai hai concentrated aqueous sulphuric acid is 98% H₂SO4 by mass haire and has a density of 1.8 gram per ml haire. The volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H₂SO4 is haib kyan tai ko akhona kai haiba concentrated sulphuric acid solution ama leire concentrated sulphuric acid solution ji gi magi keno se concentration level is 98% by mass pyramid my density na kya pyramid 1.8 gram per ml pyramid mana ikhoida kai hangakpa volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H₂SO4 is na haiba yengu se explain tauge question number 1 do no onda ne concentrated H₂SO4 solution am leramil ko masi concentrated H₂SO4 je masi kai dawi haira kanda 98% my mass percent pyramid 98% by mass ko masi concentrated H₂SO4 ji kai dawba nangna khara lauthok pire ko nangna khara lauthok pire aduga solution am cheme acid ki kanagi solution atopa dilute H₂SO4 solution ama same masigi dilute H₂SO4 solution jigi magi molarity sina kya lei 0.1 molar lei aduga magi volume jina 1 liter hai mai jina 0.1 molar lei aduga mai jina volume jina 1 liter lei hai also concentrated H₂SO4 gi magi density si kya pirami 1.8 gram per ml aunal amuka explain tauge muna tabiu aikhoina kai haiba concentrated sulphuric acid solution ama leire masigi concentrated sulphuric acid solution ji magi mass percent si 98 pirame magi density sina 1.8 gram per ml pirame masigi acid si sizinaraga masidagi acid si aina amount khara lokthora ga kaidoba solution ama sareba sariba solution ji magi molarity sina 0.1 molar leire magi volume sina 1 liter leire akhoida hangi se mana kaimta na teba masi concentrated H₂SO4 se masi kyam lauthorok toino hangone my volume kyam lauthora kanda sida hapa kan si solution se semba ya doino na hangone ko auna ahamba da khoni yeng de chong
masi sizinaraga sigi dilute H₂SO4 je semdoi dilute H₂SO4 sida H₂SO4 mole kya yawi han tidox my molarity pyramid volume pyramid number of moles thigedi kai pi akhoi molarity formula du ningjangu molarity haibdi kai haiba number of moles by volume haibni aduna isam samna kai dawrani number of moles hot kg molarity into volume molarity kya no 0.1 volume na 1 liter lere number of moles ti 0.1 yaw ko mole machine kya lere 0.1 mole machine khangadi kai buthok pe yare irai laina mass buthok pe yare kamain buthok ni mole dagi mass number of moles ki formula tu number of moles is equals to mass divided by molar mass haibani ko auna mass buthok ke di number of moles into molar mass na tro on a H₂SO4 की mass पुथोके हायगा दी number of moles into मागी molar mass number of moles ती क्या 0.1 my molar mass ना क्या 98 grams उनजा नरकांदा 9.8 grams तार यारे को on a मुन्ना खंजन बिरो कई खंगा दोबा मसीगी concentrated से सीजन नरगा इना dilute मसीदे खर लोथोरा गा इना हाप्सन खोचन तौरगा dilute से शेमबनी dilute से दिया उबा H₂SO4 की mole machine पुथोरे अदगी mass पुथोरे ज्ञान ताई को होजियों से मसीगी mass percent पिरमद्रो mass percent जी ये कोई interpretation हम तो उसे कोई ना कहीं है बा 98% by mass है का दियों मसी concentrated H₂SO4 जी की आइना 100 ग्राम लोगों मतम दो को 98% by mass है बदी कई दो बा in 100 ग्राम of सी concentrated mixture जी concentrated mixture जी concentrated mixture ji aina 100 gram lobo matam da taseng na H₂SO4 ji kya yawi haiba 98 grams yawi haimne 98 grams of H₂SO4 yawi haimne ona kai haiba 98% by mass haiba gi meaning di ekhoina mamang da so mass percent concentration terms ta ko yaw ridoni masi gi concentrated H₂SO4 ji gi aina 100 grams lo thorokpa matam da masi concentrated mixture ji 100 gram lobo matam da taseng na H₂SO4 की amount जी क्या नहीं है बा 98 grams नहीं है जानता है को 98 grams नहीं है बा औना ये मौसे सीधे की interpretation लाक्षी तो जी की 98 grams of H₂SO4 जी का दिया हो रहा है 100 grams of concentrated mixture जी दिया हो रहा है 100 grams of concentrated mixture जी दिया हो रहा है obviously adoi targadi 1 gram di kai di on 1 gram of H₂SO4 di mixture ji si concentrated mixture ji mai keno kya de on amount kya da 100 divided by kya lani siong 1 lady ni 98 le bade 1 le la di 98 si som thang do khre makha da la oidro 98 la ko grams la makha of concentrated mixture last yung akhoi na sai ke do ba akhoi na parmi ba H₂SO4 amount ji kya pamba 9.8 pamba natra 9.8 grams of H₂SO4 ji mixture ji keno da kya de yani 9.8 grams of H₂SO4 ji mixture ji amount kya de yani 100 divided by 98 into 9.8 grams of concentrated mixture कथन आनी का तारे 10 लाया 10 जो मतलब कानी 10 grams of concentrated mixture aduna munne yang biu ko akhoi gi dilute H₂SO4 solution sida H₂SO4 gi amount ji 9.8 grams yawani masi 9.8 grams ji yawhan gi haiba tarabadi akhoi na kai do botai concentrated H₂SO4 gi amount ji kya lo botai 10 grams lobo mathau tae ko concentrated H₂SO4 gi amount ji akhoi na 10 gram lobo tare matam du da kaidoba dilute H₂SO4 ji da khoi 9.8 grams ki H₂SO4 ji masi chang de phangni bu ma di mai percentage ma 100% pure oi da bai ni ko adoi di man holo hai do khoi da volume holo hai ba na tra volume hot ke ha ga diong se concentrated H₂SO4 gi amount ji 10 gram lo ni na la em mass khange volume hot ke ha ga dieng biro density piram dro akhoi gi density ki formula do ningjang o density hai basi kai ga mane mass divided by volume ga mane density value kya no 1.8 ni
mass ti kya no 10 grams leire volume khangde puthoktoini therefore volume puthokke haidi 10 divided by 1.8 leire 10 divided by 1.8 kya tare khoi 10 divided by 1.8 5.55 ml kya tare 5.55 ml tare option number 1 do tare yan tai ko aduna munna khangjan biu question ji any gyan ta daba engon da dum haibiru cheta dum lau ko any gyan ta daba cheta dum lau e dum hange ko simply gyan di taw question na hangi ji concentrated H₂SO4 mixture ma leire my mass percent ji 98% haibadi masi concentrated mixture ji da 98% amadi 98 grams amdi H₂SO4 taseng nani 2 gram amdi impurity ra kenom oire my density kya pirami 1.8 gram per ml pirami masi concentrated mixture ji da aina volume khara kanthora ani madui kanthori ba volume duga water ga yanjana dana khotana tawraga aina dilute H₂SO4 solution ama seme dilute H₂SO4 solution ji gi molarity 0.1 lei haire liter na 1 liter seme hai masi de khoina kai derive to thorokpa dilute H₂SO4 ji gi magi molarity amasung volume de sizinaraga masida H₂SO4 gi mass kya yawi ju puthore masi khanga matung dai khoina pusale kaidoba my mass percent haibai matungina 98% haibadi masi concentrated oil mixture ji gi magi 100 gram da 98 gram di taseng na H₂SO4 ni haibane ba ko on 98 grams of H₂SO4 ji masi mixture ji gi 100 grams te yawi sin takpadi 1 gram di kya de yawni 100 by 98 9.8 gram darkar oiba natra khoi dia sida tarak pasi matungina on 9.8 gram di kya de yawni 10 grams of concentrated mixture on masi solution je same ge hair ga di aikoina concentrated mixture ji 10 gram low taba 10 gram ji da 9.8 gram H₂SO4 oidoine ba ko 2 gram 0.2 om na kenom oidoine ba auda magi mass khangamni na kaido ba yare ai line na sumain tawdana puthokpani understand tawi ko tawdaba yawargadi adum aingonda haibiro NEET se sapra yare ko sima lay ahambe question a minute NEET sam te yengi ke num yare ko yare mathangi question number 1 sima si leire ko mathang question number 2 da mu yengbiro ko haipet sinjan bi bokot pe yai ko maram disiga manabo question yor kinai homework ka pi gini ko aduga amana ai sida happa kawre ko ai sida happa pa kawre but ai class se loirak pe timing dai hapti hapke ko ai students gai gi ai homework aina worksheet am shemani ko homework ki nearly 20 questions muk yauba madu gi link to ai sida happa ge group ta su thara ge ko aduga group to in thara ge ko group to in thara ge aduga adui pot to ai khogi leidana andaki by hayeng disi chapter su pra loirani sunday numita aina pyqs hapa ani ko aduga by monday dai di atomic structure tak pa horani aduna adui mamang phawbada or natraga su leidana by next week hai tare loisan na adui worksheet to mahot ko aduga probably akhoi mathangi sunday daga di si test la ani ko se mathang question number 2 yang biro description da kai haiba if H₂SO4 ionizes S hairga H₂SO4 ji water ga pule aduga H3O+ ka sideyong se reaction do ina if the soibam yaure akhoi gi description gi question da yi reaction do smain oiga dong reaction to smine oiga dong
iramgi questions in description. Reaction je shine H₂SO4 ji water ga pulle matamdu da H3O plus ions ka kai ga thok toiba akhoi nga sai gi SO4 minus 2 oi ga do H3O plus ka SO4 minus 2 oi ga do yan tai ko chema muna khangjan piro aduna balancing tawsalasi balancing tawge di oxygen amma leire H₂SO4 ani ani thoni 2 3 are 6 ko ani le mari 2 hapa 4 5 6 leire sida balancing tawr ko man kai haiba ekhoi da munni yeng view question number 2 do kai haiba description de yeng biro H₂SO4 gi amount je 0.1 moles low e banang ko H₂SO4 gi amount si 0.1 moles low e ba adoi targa di pull up na ion kya thorakani na hangak pane ba ko awni yong sidai reaction ji dum ilai na khango H₂SO4 gi balance tawre reaction ji balance taw ji ko ya de ko 1 mole low matam da si pull up da ion kya thori H3O plus ion ani thori e sulfate ion amaga pull up na ion kya thori pull up na 3 ions thori ko awna H₂SO4 gi 1 mole low matam da nana sai gi pull up na ion gi mole kya thorakpa 3 moles of ions thori ion mole hum thori gen tai ko adoi tardi mun na yeng asi che H₂SO4 gi mole kya pirami 0.1 mole piram bana tro ion mole kya thorani H₂SO4 gi mole ama kaida bada ion gi mole pull up na ahum thok H₂SO4 gi mole ji 0.1 low taraga ji ion gi mole pull up na kya thorani 3 into 0.1 moles of ions awna ion gi masing 0.3 moles thoran moles ta thamba je phajade ko aikhoina masing da thamji kamain thamni 0.3 into mole ama di kya no mole ama di 6.022 into 10 to the power 23 na tro si hap chalan asi into to 6.022 into 0.3 kya tare 1.81 1.81 into 10 to the power 20 ka 3 ions thai gen tai ko aduna sumai tawdana ion masing hot pai wani da aduna H₂SO4 molam kaida bada ion gi mole ahum thoi kamaina 1 2 3 ko aduna maram oiduna H₂SO4 gi mole masing si 0.1 kaida ragadi ion pull-up na mole kya thorani 3 into 0.1 moles 0.3 moles thoya 0.3 moles si mole da thamba phajadi masing chapchan thamge haidi mole ama si kya ga mane 6.022 into 10 to the power 23 ga mane 2 tawre tar yan tai ko sumai tawdana hokala khado sina ikhoi gi question number 2 understand to biri ko tawdaba yarga su feel free to chat up ko any understand tawdaba feel free to chat simale mathang da se question number 3 da lak biro description de yeng biro question number 3 question number 3 da kai hai the specific gravity of 98% H₂SO4 is 1.8 gram per centimeter cube cc hai centimeter cube hai ni ko 50 ml of this solution is mixed with 1750 ml of pure water hai molarity of the resulting solution nan hai question number 3 do yeng biro kai hai ba question number 3 da H₂SO4 solution am leirame magi specific gravity si kya ni hai ba 1.8 gram per centimeter cube aduga magi mass percent pirame 98% na ko masi solution si ki 50 ml lore aduga kanaga mix tawre 1750 ml of water ga mix tawre matamdu da tarakpa resulting solution dugi molarity holu hai yam chanare notes ta isan biu amtang ko
specific gravity की matangda अखोई specific gravity है बसे सीने माय formula से शेंग भाई specific gravity specific gravity है बदी मथक तना कई थम्दोइबा नंग पोसक तुगी मागी density of the substance हापनी मथक तना कई हापा मथक तना density of the substance मखा दना कई हापा इखोइना density of water density of water at 4 degree centigrade को मथक तना कई हापा substance तुगी मागी density मखा दना कई हापा density of water हापा तो बुदो बकोइन कई खंगी density of water री क्या ताई 1 gram per centimeter cube तादरो अदुना कई दवी specific gravity है बसी density of the substance ने ना लोगो दोने को मरम दी कई गी density of water जी 1 gram per centimeter cube तागे मिन density of water जी क्या गमाना बा 1 gram per centimeter cube और नमसी की यूनिट से एक्सप्रेस तो ना बता रहा गदी के दो बा नंगी specific gravity पिरम बदियों माय specific gravity दी gram per centimeter cube ता पीदरो अदुना नंगा कई खंगा दोबा gram per centimeter cube ता पीरबनिना specific gravity की वैल्यू सी density का माने लोसन बियारे मरम दी water की वैल्यू सी 1 चटपने ज्ञान ताई को सिमा notes तो सन बि को notes ता इसन बिरम उसी पार्ट इसाई notes तो दा इसन बिरम सिमा लेजर से यारे को औने यो मान पिरामिड सॉल्यूशन जो H₂SO4 solution हम पिरामिड question number 3 do my specific gravity na 1.8 gram per centimeter cube question number 3 my specific gravity hai basi akhoi na kainen lo ba yare density ne na dum lo ro yare kya piramba 1.8 gram per centimeter cube centimeter cube se akhoi na kai ga sam mane ml ga sam mane 1.8 gram per ml and lower share. My mass percent क्या पिरामी? Mass percent 98% पिरामी को 98% पिरामी को सिद्धगी होंगे से मसीगी H₂SO4 solution जे को initially my volume क्या पिरामी 50 ml पिरामी मसीदा के लोग दोइबा इकोई ना इसिंग यान जंदुई बा इसिंग क्या यानजली 1700 का 50 ml यानजली अदुगा कइदोरे अनोबा diluted H₂SO4 solution हम सेम diluted H₂SO4 solution हम सेम मसी diluted H₂SO4 solution की वॉल्यूम क्या होनी initially concentrated की 50 ml लेजरम बनी 1750 ml of water हापचले अनि जे पुंजनरनी 50 plus 1750 पुंजनरगा 1800 ml तार यारे को अदे योंसे मसी की initial solution जे initial concentrated solution जी की मागी कई होतो बा initial concentrated solution जी की मागी molarity होत से बा मुनियो molarity कमाइन होत बा density दे की molarity होत पे formula दो molarity जी mass percent into density into 10 divided by molar mass and I molar mass solute to be molar mass of solute सी फॉर्मूला से पांडोरिम या समझन गदों मास परसेंट क्या नो 98 पिरामी डेंसिटी क्या पिरामी 1.8 10 ले मोलर मास ऑफ सॉलिड H₂SO4 की मोलर मास क्या नो 98 कथन ना रे मोलारिटी क्या तारे 18 m तारे और ना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जी की वॉल्यूम ले रहे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जी की मोलारिटी ले रहे सॉल्यूशन जी डाइल्यूट तो रहे वॉल्यूम ले रहे माय मोलारिटी पुथोक पे इराई ले रहे अखोई की मोलारिटी केनो की डाइल्यूशन की फॉर्मूला तो पालन कमाइना m1 v1 जी के गमने m2 v2 गमने है को सी की माय केनो दुना मोलारिटी डाइल्यूटेड की मोलारिटी जो m2 है m1 से ना क्या नो 18 v1 से ना क्या नो initial concentrated ची की माय वॉल्यूम 50 m2 खंगदे v2 ना क्या नो 1800 therefore m2 क्या तार है 18 into 50 divided by 1800 को
10 तारे 1/2 अदो तारगदी क्या तारे 0.5 मोलर तारे और मोलारिटी वैल्यू क्या तारे 0.5 मोलर तारे ऑप्शन नंबर क्या दे यावरे ऑप्शन नंबर 2 दे यावरे यान ताई को समाइन तौदन होतकदो और इनिशियल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जी स्पेसिफिक ग्रेविटी दगी डेंसिटी पुथोरको से खंबियु को अदे के दौबा माई मास परसेंट पिरमे माई वॉल्यूम पिरमे अदो तारी कई होतोरप पे यारे इराई लाइन मागी मोलारिटी थिदोप पे यारे अखोइन को मास परसेंट का डेंसिटी का मरी लेना कोई कंसंट्रेशन टर्म्स तापदा लो याउखिदना मधु पालगा मोलारिटी पुथोप पे यारे अदुई मतुंगदा डाइल्यूशन तौरे डाइल्यूशन तौर मतुंगदा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दो लेरे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दुई वॉल्यूम दि क्या तानी इनिशियल वॉल्यूम प्लस डाइल्यूट तौब मतंदा हापप वाटर की अमाउंट दो तारी फाइनल मोलारिटी पुथोप लो वानी दा दुगा एम टू कई पालगा अखोगी मोलारिटी दा केदो डाइल्यूशन की फॉर्मूला मधु पालगा पुथोप वान सिना अखोगी क्वेश्चन नंबर 3 अंडरस्टैंड तौरी को सिमा लेजारे सिना अखोगी क्वेश्चन नंबर 3 को मखा तारकपदा से मखा तारकपदा येंबिरो क्वेश्चन नंबर 4 दे येंबिरो मखा तारकपदा को क्वेश्चन नंबर 4 येंबिरो होलिबो म्याम से आइगे स्टूडेंट्स गे हाइफेट सिंजन बियु को मरमदी क्वेश्चन माना मानब खोटप म्याम यावरकनी अइना ग पीबो बुकलेट तुदा माना मानब क्वेश्चन नु म्याम यावरकनी को अदुगी होरेन अइना हाइरिबो होमवर्क ग्रुप ता थारके हाइरिबो होमवर्क तु मदुदसो अखोय माना मानब क्वेश्चन नु म्याम यावरकनी अदुना सिंजन बियु को फजना काउगी खोटकी बस तमगम देदना से मथंग दियो क्वेश्चन नंबर 4 जो कई है in synthesis of phosphorus trichloride by mixing 12 grams of phosphorus with 35 grams of chlorine gas 45.2 grams of solid phosphorus trichloride is obtained hai ko man choose the correct statement and pyramid hoji yong se question number 4 the reaction jo pyramid phosphorus si ke doba chlorine ga react tawre kai form tawba phosphorus trichloride form tawba यारे को phosphorus सी chlorine का पुले अदुगा कई फॉर्म तो phosphorus trichloride phosphorus की अमाउंट क्या हम लवी 12 grams chlorine की अमाउंट क्या हम लवी 35 grams phosphorus की अमाउंट क्या लोबा 12 grams chlorine की अमाउंट क्या लोबा 35 grams मतलब दुदा phosphorus trichloride क्या फॉर्म तो है बमान है जी 45.2 grams सिथो इन है को मान मखा द स्टेटमेंट में पिरामे क्लोरीन जिना लिमिटिंग रिएजेंट नि चुम्ब्रा अनि सोदुना केदोबा रिएक्शन जी के परसेंटेज यील्ड जी क्या ताई है 90% ताई चुम्ब्रा मथंग द रिएक्शन से लोइग्रा मतुंग द फास्फोरस की 10 ग्राम लेमौई चुम्ब्रा लास्टनागा लोइमक चुम्ब्रा को मुनि यंगसी ऑप्शन अनि दी यंगदबा यार मरम दी ऑल ऑफ दिस यावमने को और अहमद लिमिटिंग रिएजेंट थी दोस लिमिटिंग रिएजेंट थी गे दी reactant ani si kai thita re number of moles han aunyo number of moles thirakpa matam da kamai puthongni given mass divided by molar mass kya no phosphorus ki 31 chlorine ki so given mass divided by Cl2 hairi kya tare 71 muna khangu ko chlorine amasi 35.5 lomi chlorine ani Cl2 hairi chlorine ani ni madudi 71 tare ko adoi tare 12 divided by 31 0.39 0.39 है तो तार माई सी ना 35 divided by 71 0.49 तार और दे मोगी के नो मुक्ति दो जी लिमिटिंग रिएजेंट थी तो कमाई थी दो लिमिटिंग रिएजेंट जी इराई लाई reactant singi mole masing da kanani heta divide tawba moi gi coefficient ni heta divide tawba my mole masing kya no 0.39 moles coefficient kya no 2 natro sine heta divide tawsal my mole masing kya no 0.49 coefficient kya no 3 sine heta divide tawsal answer kya आता है 0.21 जार 219 29 जार 18 10 25 जार 10 sine divide tawro kya आता है
0.21 jar 31 jar 3 layer 1936 jar 18 layer aduga 191033 jar 9 adoi di yong se mole machine da coefficient divide to the phosphorus ki oina 0.195 tare chlorine ki case na 0.163 tare kai haiba apik pa potuna limiting reagent oini kanan chawre phosphorus na chawre chlorine na pi chlorine jena kai oidoiba chlorine jena magi limiting reagent oil chlorine na khoi gi kai oire limiting reagent oil ado ni chumi lali man haise man haiba to option number 1 diu option number 1 da kai hai chlorine jena limiting reagent oil haimi masi option number 1 jim chumme ko mana kan da thanam to bodabu all of this yawbuni na 1 chumme na 1 kha khot pa ya dabam lai ri bu ko amaga yeng da ya dri ono option number 2 je te yeng si 3 na budi lai ko but 2 je te yeng jalasi percentage yield thi do yong ko percentage yield thi se ekhoi ne yong limiting reagent ki question da di kai hai product ki amount ji kana da depend tawi hai product ki amount ji nanga sai gi limiting reagent dui makha poli hydro auna chlorine gi mole masing 0.49 chlorine humna phosphorus trichloride ani thok tro aduna 3 moles of chlorine na kaidawi phosphorus trichloride ki mole ani thoeb 2 moles of PCl3 thoeb 3 moles of chlorine na kai haiba phosphorus trichloride ki mole ani thoeb chlorine ki mole am tang lawradi 1 mole of chlorine na di phosphorus trichloride kya thoni 2/3 moles of PCl3 phosphorus trichloride yare ko last ta kai doba chlorine ki mole kya lei chlorine ki mole 0.49 litro aduna therefore 0.49 moles of chlorine chlorine ki 0.49 moles ndi kya thora ni phosphorus trichloride ki 2/3 into 0.49 moles of PCl3 thora kya tare 2 into 0.49 divided by 3 0.33 0.33 moles of PCl3 PCl3 की मोल मशीन क्या थोरक तो इबा 0.33 थोड़ा नहीं यार को हौजिक phosphorus की मोल PCl3 की मोल मशीन ले रहे अदुना हौजिक मखा ताबदा यंगबिरो को माय मास को थोड़ा से मोल मशीन ले रमनिना मास को थोके हायदी मास ऑफ PCl3 को थोरके हायगदी ये मोल क्या थोरकनी है 0.33 into PCl3 की मास होलसी PCl3 की मास की phosphorus की 31 ले जा रहा है chlorine अनि की 71 chlorine अमगी ना 35.5 ले रहे 567 ले रहे 336 ले रहे 7 का 6 का 13 तारे 137.5 क्या नहीं तो 137.5 मागी मोलर मास तो निको हजन ताखरब तो निको 45.37 45.37 अदो राउंडिंग तौरगा 45.4 ग्राम खन लो यार औना अखोइना कैलकुलेशन तौबा मतम ददिने PCl3 की मास सी 45.4 ग्राम्स थोंनी न तारे को हाउएवर मान क्वेश्चन दा क्या थोइन हायरमी 45.2 ग्राम्स थोइन हायरमी को अदुना अखोइ परसेंटेज यील्ड होचेबा परसेंटेज यील्ड कमाइन होदि percentage yield hot ke hair gadi nangi mathak na kai tham gadau ba observe kya taseng na kyam thori I have do taseng na kyam thori hai 45.2 grams makha da na kai hap kadau ba nang na maths ki matung ina mathematically ekoi na expect to do kyam thorkan ni expect to kyam thorkan ni expect to 45.4 grams into 100 to lor 99.55 99.56% है मान ली yield क्या है बा 90% का खाएंगे ऑप्शन नंबर 2 दा हुई क्या तासली 99.56 था अदो ये चुम्मीद्रो मा है दो
लाल को अदुना कई खंगदोबा सिदगी ऑप्शन नंबर 2 से लाल ऑप्शन नंबर 2 लाल दी ऑल ऑफ दिस होरमगदरा ओरमरोय ओनली ऑप्शन नंबर 1 खक चुमामनी अदुना क्वेश्चन नंबर 4 की सी ऑप्शन नंबर क्या खक चुमदोइबा क्वेश्चन नंबर 4 की सी ऑप्शन नंबर 1 खक चुमदोइ ग्यान ताइ को सिमा मुना खंजनबिरो से मथंग दे याम फजबो क्वेश्चन हम लाए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 सिमा याम मुन्ने येंबिरो को सिदा नंगी हाइड्रोकार्बन गे न केनो में येलकनीबो क्वेश्चन नंबर 5 सिमा याम मुन्ने येंबिरो याना हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन हम इरकनीबो को क्वेश्चन नंबर 5 सिमा मुन्ने येंबिरो हाइड्रोकार्बन की इक्वेशन हम इरकनी अखोगी हाइड्रोकार्बन की मागी केनो तोबो ये से हाइड्रोकार्बन की क्वेश्चन नंबर 5 से से 40 ml of a hydrocarbon description देंगे बिरो को 40 ml of a hydrocarbon undergoes combustion in 260 ml of oxygen and gives 160 ml of carbon dioxide है को कई है बा क्वेश्चन नंबर 5 ता है जी हाइड्रोकार्बन नंबर ले रहे हाइड्रोकार्बन जी 40 ml जी combustion तो है अदुगा कई गा कनागा पुनलगा 260 ml of oxygen का पुलगा मतम दुदा कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट 160 ml थोड़ी है गैस में हमसे आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को इफ ऑल द गैसेस आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ना है को और गैस में हमसी सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द मेजर तौरे है माना कई होलू है अखोदा फॉर्मूला पुथोरू है हाइड्रोकार्बन सी मुन्ना सी होत के है क्वेश्चन नंबर 5 से होत के है याम इंपोर्टेंट को सी नोट तौ को हेंग अखोना हाइड्रोकार्बन ताकदौदी अमुक याम फजन ताकलखिनीबा इक्वेशन गसे को बट इक्वेशन जे सुमाइना हम लेब अखोई हाइड्रोकार्बन कंबसन तौबे इक्वेशन जे एनी हाइड्रोकार्बन द सने सी इक्वेशन जे CXHX plus X plus Y/4 O2 एरो कापो XCO2 plus Y/2 मसी कई कौई है कांदे खोइना जनरल कंबसन इक्वेशन कौवे हाइड्रोकार्बन की कई कौबा जनरल कंबसन इक्वेशन कनागी जनरल कंबसन इक्वेशन अखोगी हाइड्रोकार्बन की जनरल कंबसन इक्वेशन मसी को और मसी कई कौबा जनरल कंबसन इक्वेशन फॉर हाइड्रोकार्बन्स को होजी यंग से मान कई है सिगी हाइड्रोकार्बन जी की अमाउंट जी क्वेश्चन नंबर 5 टू 40 ml लवी है ऑक्सीजन क्या आगे पुली है ऑक्सीजन 260 ml का पुली है मतम तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या थोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड सी 100 का 60 ml थोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट यारे को हजे खोइना तौदोइसो माना कंडीशन हम पलंबनी गैस में हमसे सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द लेय कई हायरम माना यावरिबा गैस सिंग सी कई द लेय हाइबा सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर सिदी कई वारी नो सेम वॉल्यूम सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर जे अखोई कई वारी द तौगी एवोगैड्रोस तौगिद्रो एवोगैड्रोस लॉ द कई हाइगी equal volume of gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules kana haigidro aduna akoina leigiba ama ningjangu gas ki case ta khak applicable oi ko gases ta khak applicable oi kai leiraba moi si same temperature same pressure leiraba matam du dane moi gi molar ratio ga ne kai ga sam anai मोगी वॉल्यूम रेशियो को सब माने एवोगैड्रोस लॉ के मतुगिन होइना हाइबदुनी को गैसेस सिंग जी के दौरबा सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन द थमगदी गैस सिंग दुगी मोगी वॉल्यूम सिंग दुई मरक लेबर रेशियो दुगा गैस सिंग दुगी मोगी मोल मसिंग के मरक लेबर रेशियो दुगा अनि दो सब माने सि मतम सिदा नगी गैस की मोल मसिंग सिगा कई का इक्विवेलेंट ओइरी माय वॉल्यूम दुगा इक्विवेलेंट ओइरे को मोल दो वॉल्यूम ने लॉक्सन बेयाब वॉल्यूम दो मोल ने लॉक्सन बेयाब मोंग द को इक्विवेलेंट ओइने
ratio di wani ko aunio monio se hauras sigi kaidoba hydrocarbon gi 1 mol sina kaidobi nanga saigi carbon dioxide sigi x moles ka pundro ko hydrocarbon ji kai haiba 1 mol ga carbon dioxide ki x moles ka puli ona kai haiba 1 mole of hydrocarbon ji ga si y hai ga dong sorry CXHY kai ga punba x moles of carbon dioxide ka puli ko ona mabani mark le ratio ji 1:x ne masigi same ratio ji volume do su lei aduna khoina combine puthorok pi ai 1 ml of hydrocarbon ga kai ga manaba x ml of carbon dioxide ka mana input horok pa yare manam di mol ani gi marak leba ratio ji magi 1:x ta pun mani samani volume de yenga ga su 1:x ta pun ni ko simale 1 ml ga siga pule hai adoi tar di hydrocarbon ge amount kya pirami 40 ml piram bana tro 40 ml of hydrocarbon na di carbon dioxide kya puthora ni 40 into x ko 40 into x ml of carbon dioxide puthora ni ko haibadi carbon dioxide ki amount kya thora ni 40x ml of carbon dioxide thora ni ko however question da kai dawi carbon dioxide kya thori in pirami 160 ml thori in piram dro adoi target sigi 40x si kai ga mana doi 160 ji ga na kan dei ra kemo volume of carbon dioxide chi kya piramba question da 160 ml pirame ekhoina hot padadi volume of carbon dioxide 40 ml of hydrocarbon sijina matam da carbon dioxide kya thorkan in tare 40x ml thorkan in tare ko 40x 160 si ga mana x की वैल्यू क्या आता है 4 था x की वैल्यू क्या आता है 4 था और सी x की वैल्यू 4 था x की वैल्यू 4 था ऑप्शन यावब्रियो x की वैल्यू 4 था ऑप्शन अनि यावी को ऑप्शन नंबर 2 दम को ऑप्शन नंबर 4 दम सी बाउ क्लियर होय मथंग दम y मु खोचेब जब माने हुजी की अंक दुनि दम तोक्सन दोइ सिगी हाइड्रोकार्बन जी की 1 मोल ग 1 मोल ऑफ CXHY गा ऑक्सीजन की मोल क्या गा पुली ऑक्सीजन की मोल मसिंग x plus y by 4 moles of ऑक्सीजन का पुली को समाने अदो जे मबानी मरक्ट लेबे रेशियो जी क्या दा कई रेशियो दो पुन बा 1:x plus y by 4 अदो जी मोल रेशियो को वॉल्यूम रेशियो को माने हाइमिना 1 ml of CXHYG ऑक्सीजन ml क्या गा पुलनी x plus y by 4 ml of ऑक्सीजन का पुलन लास्ट तक दौबा अखोइना ngसाइगी 40 ml पिरम नत्रो हाइड्रोकार्बन गिदी 40 ml of CXHYD क्या गा पुलनी सिगी x plus y by 4 into 40 ml of oxygen ga pulan ko however akoi da oxygen ge volume kya pirami 260 pirami akoi no hot padadi kya tani haire x plus y by 4 into 40 tani hai nakan da holos volume of oxygen ji kya piramba 200 ka 60 ml piramba ni akoi no hot padadi si tani haire x plus y by 4 into 40 तानी है x की वैल्यू क्या था 4 था 40 जिना 260 दा डिवाइड तौरगदी कानी 4 जिना 4 6 are 24.5 तार थांदोखरो y by 4 जी क्या तार है is equals to 2.5 तार therefore y की वैल्यू ना 10 तार औ ना खोई के दौरे x की वैल्यू ना हुजी क्या तारे x की वैल्यू ना 4 तारे y की वैल्यू ना 10 तारे सिन ताकदी आई फार्मूला से कई लानी cx है C4
H kya laani 10 laani option number yaw bring you option number kya dawi ekhoi option number 4 de out ko option number 4 de out option number 4 de out ko sima le on sima muna khangjan bir ko sina ekhoi question number 5 tan si cái nôm đây đấy ko sima question number 5 sim lay sima sinjan bir ko adagi mathang da sima lay re sima lor matung da khoi question number 6 se tausi ko sima sinjan biro mathang da question number 6 to thosi a minute ko itam ti yeng ok ke mathang question do pabiro description dagi mathang question number 6 to pabiro kay haiba question number 6 to the khoi the composition of compound A is 40% X and 60% Y. The composition of compound B is 25% X and 75% Y. According to the law of multiple proportion, the ratio of the weight of element Y in compounds A and B. Question number 6 to description da ko yam phajaba question ni sisu. Akhoi na ne compound nama lai compound A haibam ga compound B haibam ga. Compound A sisu element ani khak pula sabani element X haibam ga element Y haibam ga. Similarly, compound B sisu element X haibam ga element Y haibam ga pula sab. Ko akhoi law of multiple proportion follow to wi matang to dorim ne se uni yung biro kay haba compound jong compound A haibam ga compound A haibam ga compound B haibam ga le compound A sida su kay yawi X yawi Y yawi compound B sida su X Y yawi compound A de yawi X si chang ga Y B ga chang ga siong X si chang Y gi chang X si chang na 40% yawi Y gi chang na 60% yawi compound A sida ko compound B sida X si chang kya yawi 25% yawi Y gi chang na kya yawba na ngasai gi 75% yawba yare ko mana hakhoi da hai se kai haiba na ngasai gi law of multiple proportion gi matungina ko law of multiple proportion gi matungina na ngasai gi element Y gi ko element Y gi moi gi element sing si element Y gi moi gi mass ratio puthu weight ratio puthu haimne law of multiple proportion gi matungina kai haiba compound ni mak si element Y yaudru Y si X amount ni Y gi amount element Y gi mass sing si ani si mak level ratio puthu hai ko ratio se direct to puthok pa ya de maram di mana
law of multiple proportion palambanina ningjango law of multiple proportion hairagadi mass se element amagi mass se kaidawa tai fix taw mathau tadro mass fix taw body compound animak sidi yauba particular element amagi mass se kaidawa chap manaba tai sida diong a sida x 40 yawi y na 60 b dana x 25 yawi y na 75 mass se manaba yawbra yawde dana mass fix taw deba mass fix taw am changeba adune yo x ki mass fix taw sida yo 40 grams ne ta loksalasi ko percent ji gram ne ta loksalasi 40 gram of x kya ga punba 60 grams of y ga pulaga yaw nangi compound a da adoi di 1 gram of x ti y kya ga punni 60 by 40 grams of y ga pulan sima khangjan biro ahambe ko ahambe kai khanga doba 1 gram of x y kya ga punni hai basima khangjan biro mathang da 25 grams of x y kya ga punni 75 grams of y ga punni adoi targa di 1 gram of y di x di kya ga pulani yengu 1 gram hai diong 25 len badai 1 ori 25 som chaloi dro sila di kai lani divide 75 by 25 grams of y ga pulan yare ko adoi tar di huji kai doba sina b dana x ki 1 gram ga y gi 75 by 25 grams ka pulan ani sigi ratio thi do pira lo man mass ratio di y gi ratio hai auna ratio je kai tarni mathak tana 60 by 40 makadana 75 by 25 hi ratio se ta yeng lo ne sidi kya tare kathana dana makhai hi kangu sidi 3 da sidi ji kya tare 3 by 2 tare di kathana gra kan 1 by 2 ta ba mali ko auna ratio kya tare or 1:2 yan tare ko 1:2 ki ratio kai diawi option number 1 there. 1:2 की ratio option number 1 there. Similar. Ko sina ikhoigi question number 62. Sina ikhoigi question number 62. Yan tai ko sima haipet yengjun bi. Sima haipet yengjun bi. Similar. Holy ma'am hai pe chinjan bi ku manava question adagi manava question ji hot tabam to tawun practice tawba ji manava ma'am thengnan lo hot ka daw ain pi ba booklet ki question noi hanagi pai ba top booklet lainaram ba shai adu so hot piu adagi NCERT da NCERT textbook NCERT ki exemplar ai loi tharakani ko loi mak tharakani matang chan chana loi mak khot pi ga dawni question myam ji ko hanjan hol kan dan se mathang tarak pada question number 7 di engbir ko 7 da kai hai 0.132 gram of an organic compound gave 50 ml of nitrogen at STP hai. The mass percentage of nitrogen in the compound is close to kai haiba organic compound nama laire organic compound jigi 0.132 grams hai machina nitrogen gi keno kya pirakpa volume kya pirakpa STP condition da 50 ml pire akoina holu hai kai holu haiba mass percentage of nitrogen in the compound holu hai ko on ilai lai question kamai hoto kani se ai hana irake question number 7 do yeng biro description da akoi gi organic compound je lai organic compound je kya oiba mai mass 0.132 grams ko machine nitrogen kya thorok pa
नाइट्रोजन की अमाउंट जी 50 ml थोड़ी है कई कंडीशन दा एट STP STP दा 50 ml थोड़ी है गदी माय मास होतोप याने को अदे मुक्सो हाइगियों से मा अतोप वाम त पलमदे ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन पी थोड़ी है बदंग औना मसीगी नाइट्रोजन पीरी से कायदे यावबोय दोइबा ऑर्गेनिक कंपाउंड से यावबो आक्तने माना खोइदा हंगी की ऑर्गेनिक कंपाउंड से दा नाइट्रोजन की मागी मास परसेंटेज होलु हाइमनेबो को ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन क्या यावी हाइबदो अदुई परसेंटेज होलु हाइमनेबो को ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन की 50 ml पिथोए खंगनेबो हाइरमिस ओनियो नाइट्रोजन की मास होतोक्सी माय नंबर ऑफ मोल्स होत के दी 50 given volume divided by 22,400 क्या तारे 5 divided by 22,400 1 2 3 4 2.23 into 10 to the power minus 4 2.23 into 10 to the power minus 4 तारे my mole मसी को मास होत के है गदी मास होत के है गदी number of moles into molar mass ne number of moles ti 2.23 into 10 to the power minus 4 molar mass ne kya nitrogen ani ni na 20 ga 8 ta ko ona into 62.44 62.44 into 10 to the power minus 4 1 2 3 4 क्या था 0.06 1 2 2 4 4 1 2 3 0 point 0 हम देखें तो 0.00 हाँ 1 2 3 4 चुम सीतार को अदो तार दी हुजिक यों रीजनिंग से मुन्ना खंगोबो को हॉट पर सीधे हम लाई रीजनिंग से मुन्ना खंगदोसी मसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिना नाइट्रोजन की 50 ml पी बनेबो को अदो तारदी नाइट्रोजन पीरी मैम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से यावरिबो नाइट्रोजन दोनेबको अदुना ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन क्या यावी 50 ml यावी 50 ml से मास होइन होलगदी 0.006244 ग्राम यावी है को औने औसे नाइट्रोजन की मास परसेंट होत के हायगदी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होत के मथक्तना नाइट्रोजन की मास हापो नाइट्रोजन मास क्या 0.006244 मखादना क्या कंपाउंड की माई मास इनटू क्या 100 अदो तारदी 0.6244 divided by 4.73% record into 10 to the power into 62 point से ले रहे को -4 ले रहे -4 ले रहे 50 के नमती येंगे को divided by 2 to 400 1 2 3 सी 10 to the power -3 होई दों 10 to the power -3 10 to the power -3 0 से मुठात कर दो ये 0.0 हाँ 1 2 3 और ये सीधा 0. फिलहाल इसी तौर 40 का 7 पॉइंट क्या तारे 34 47.34% तारे ऑप्शन नंबर 3 दो हम दो मार ऑप्शन नंबर क्या तारे ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 दो तारे अदुना मुन्ना खंगु सिदा थोरीबा नाइट्रोजन जी ऑर्गेनिक कंपाउंड दु यावबा नाइट्रोजन गाक्तनी अदुना ऑर्गेनिक कंपाउंड से नाइट्रोजन क्या यावी 50 ml यावी ना हायरसीआई और मास होइन होल कांद 0.06244 ग्राम यावी इन दौरसीआई और नाइट्रोजन की मास खंगमनिना मथक्ता हापो मखादना कंपाउंड की मास हापनी इनटू 100 मतमदुदा नाइट्रोजन परसेंटेज ता मसिना अखोगी क्वेश्चन नंबर 7 यारिको मसिना अखोगी क्वेश्चन नंबर 7 सिमले मसिना क्वेश्चन नंबर 7 नी सिमले मथंग से क्वेश्चन नंबर 8 तो हाइफेट येंबिरो को 8 चों से इंगा साइ हाइबदुनी what volume of 75% H₂SO4
by mass is required to prepare 1.5 liters of 0.2 molar H₂SO4 density of the sample pyramid. I check ngasai question number 1 do chap man ko na ngasai gi H₂SO4 ji 75% by mass my mass percent pyramid density pyramid ko masi sizinaraga akhoi gi H₂SO4 solution am saw haire question number 82 sagadova solution du gi my molarity pyramid volume pyramid akhoi gi solution dugi magi kai puthorani initially magi molarity piramba volume piramba solution dugi nang sarakadori ba solution dugi resultant solution dugi mai mol masing puthoro mass puthoro adui matungina nang saigi concentrated H₂SO4 75% leibase masigi mass kya lowni do puthokpiro aduga loina na magi volume puthokpa yani mass puthokpa yani mass puthok yadi mai density sidina volume puthokpa yani na saigi question number 1 jigane question number 8 chiga chap man question mong number on thor ko dang ko sima question number 8 chima homework if anyone kai gumba ngamdraba question ji hot pa ngamdraba anyone da feel free to contact ko group tabu harak poi gera personally harak poi gera feel free to contact ko question number 8 chima homework to thok pir question number 9 to giro 9 du irai lai ba question ni limiting reason yeng thok yeng jin gi Tienge. Question number 9 ge aina irami reaction jai kitang shoiba ma de am tang recheck tor ki ge question number 9 je tien jan to thos tien je kai haiba question number 10 du yeng biro last question in an ionic compound molar ratio of cation to anion is 1:2. Ionic compound nama laire maduda cation ga anion ge marakta labor ratio is 1:2 layer. If the atomic mass of metal and non-metal respectively are 138 and 19, then the correct statement is na haim ne bako. Si taw dimai mamang kenom tang hana hayam ge. Akhoi gi ne ionic compound gi case ta din wahi ghar sizine munna khang ionic compound gi case ta je khoina wahi khara onthok onjin tawe anka hotpo chap manai ko simply mangonda dine khoina moles haiba wahi je masigi mahutta formula unit kana ga haine formula unit ana ga haine moles ka haina de ko ade mangonda di molar mass ka haibje molar mass or molecular mass ka haibse kai ga haine madi kai haini hai kan da khoi formula mass haini formula mass kan khoi molarity ga haina bse molarity ga haina bse molarity ga haina basi molarity ga haina basi adum kai kawi hai kan da khoi gi formality ga haini formality molarity je khoi do formality kana ga understand to ne formality kana ga haine ko aw sima isai notes ta hepet isan bir my students sima isai notes ta hepet isan bir ionic compound gi case study mole ji kai ga haine haiba khoina formula units mole haibi mole sing ji adagi khoi gi molar mass ka ji or molecular mass ji formula mass molarity ga ji na khoi gi formality kana ga haine yare ko Objection. Last question 10 do pabiro. Kai haiba 10 jida. In an ionic compound, the molar ratio of cation to anion is 1:2 haiba. Ko cation ga anion ga marakta labor ratio is 1:2 le haiba. If atomic masses of metal and non-metal respectively are 138 and 19, then the correct statement is ko munna khango kenoma metal lamaga ne non-metal lamaga pullaga metal lamaga non-metal lamaga pullaga kai sarakpa nangi ne ionic compound ma saba matamda metal lamaga non-metal lamaga pullaga ionic compound sabada always nangi metal jina kai form tawni
cation form tawniba cation adi positive charge puba ion aduga nangi non metal je machine always kai form tawni ekhoigi anion form tawniba anion haragadi negative charge puba ion ko on man kai haramba ionic compound je da cation anion ani mark labor ratio ji 1:2 haiba natra adoi ionic compound ji formula je kai oire har kanda m a 2 smain lo my formula haibadi metal gi 1 anion gi 2 non metal gi adoi 1:2 le den ratio ji cation metal ji 1 anion ji 2 ko adoi ratio kya le 1:2 le den hojio moi mass photo ki formula mass photo ki metal oi bana cation oi ba metal si kya lumi hai question da haram ba da cation oi ba nangi metal si 138 lumi hydro metal am tangina 138 plus non metal nangi anion ji kya lumi hai 19 lumi hydro 2 into 19 138 plus 9 2s are 18 1 in 3 jana 176 star ko ona option myam du yung karam option chumni ahambada molar mass of the compound is 176 simadi oiro simdi oibi 176 star si mathang the formula mass of compound is 176 sigadi 157 tab du oiro ko ona karam bakhani b do maram di akhoina kai haiba ionic compound ki case study molar mass haina di formula mass haina in haib gyan tare ko so akhoi gi question ji sida loira aichima homework to biro ai sigi matung da hojik group ta akhoi gi telegram group ta subscribe to driba yawdi toksan biro ko telegram group ta akhoi gi ai hojik homework thara ge adu question number 9 jima reaction jai am tang genga ke reaction ni economic to go man do miaw ko reaction jai kitang yang ki tang so with this ngasi class 5 the losalani and good night ko bye bye